mole. So how many of you have heard about mole concept, and how many of you have learned about this concept? Tell me. Do you know what is mole concept about? Say yes if you know what is mole concept or what is about. No? Okay, I'll tell you. See, if you go to a market and you want to buy something, suppose you want to buy milk or water bottle. So that is bought in liters, 1 liter bottle, or you buy a cold drink that is bought in liters. If you buy bananas, that is bought in number, in dozen. If you buy rice or anything is like any vegetable, you buy it in kg, kilogram, right? So this is the way you get the things from the market, either in the form of liters or in the form of number or in the form of kg. But these all are macroscopic things, big things. But if you want to say something about the quantity related to microscopic things like electron, proton, then you don't talk in the form of liters, number, or kilogram. You talk in the form of mole. So what is 1 mole? 1 mole of these microscopic particles can be expressed in the form of liter, in the form of number, in the form of mass. Right? It can be expressed in the form of mass, number, and volume. But not in the same way in which we classify the macroscopic particles, because these particles are very small and number is very large. What is exact number of atoms in 1 mole? Do you know that? Exact number of atoms in 1 mole. That is, we call it Avogadro number of atoms based on the name of the scientist, which means 6.02 to 10 raised to power 23 atoms. This is the number of atoms which is present in 1 mole of any element. It could be sodium, it could be carbon. So if I take 1 mole of carbon, that will mean it contains this much number of atoms. Similarly, like if I take 1 dozen of bananas, it has 12 number of bananas in it. 1 dozen means 12 units. But 1 mole of any element would mean 6.02 to 10 raised to power 23 units, or we call them atoms. This much atoms will be there in 1 mole of any element. This is the way to express 1 mole of any substance in the form of number. If I want to express it in the form of volume, 1 mole of any element will have 22.4 liters of volume. This is fixed volume, right? This number is fixed for 1 mole. For 2 mole, it will be 2 into 22.4. For 3 moles, it will be 3 into 22.4. For 4 moles, it will be 4 multiplied by 22.4. But for 1 mole, this volume is fixed. 1 mole of any element will have this much volume. And if I talk about mass, for that you need to learn atomic mass of an element. What is atomic mass of carbon? That is equal to 12 grams. Atomic mass of oxygen is 16 grams. Atomic mass of hydrogen is 1 gram. Atomic mass of sodium is 23 grams. These are some of the elements which are very commonly used, and you should memorize the atomic mass of these elements. So 1 mole of mass of any 1 mole of any element will be equal to its atomic mass. Suppose we are taking carbon. So 1 mole of carbon will have
12 grams. Right? This is specifically for carbon, but it will vary from element to element because every element is having different atomic number and different mass number. Some of them do have same mass number and they are called isobars. But otherwise, element, whatever is the atomic mass of element, that will be the mass which is present in 1 mole of that element. I repeat this. These are the ways in which we get things for the microscopic particles. We get milk in liter, we get banana in number, dozen, and we get rice in kgs, kilograms. But we cannot do the same for the microscopic particles. For microscopic particle, 1 mole of any element will have mass which is equal to its atomic mass. 1 mole of any element in its number will have definite number of atoms, which is Avogadro number of atoms, which is a fixed number, 6.022 10 raised to power 23 atoms. And 1 mole of any element will have fixed volume, which is 22.4 liters. I would like you to write these things, whatever I'm going to write now. We are doing mole concept. And this says that 1 mole of any element. Suppose I'm taking carbon atom. So 1 mole of carbon atom has to be expressed in terms of mass, in terms of number, and in terms of volume. Now try to apply whatever I've told you. If I have 1 carbon atom, what will be the mass of that atom? That will be equal to how many grams? 12 grams, because that is equal to its atomic mass. And atomic mass of carbon is 12 grams. Right? If I talk about number, 1 mole of carbon atom has how many number of atoms? That is fixed. 1 mole of any element will have Avogadro number of atoms, which is written like this also. This is sign for Avogadro number, and its value is 6.022 10 raised to power 23 atoms. This is Avogadro number of atoms, which is present in 1 mole of any element. And 1 mole of any element will have 22.4 liters of volume. This is fixed for 1 mole. Right? Is this clear? Fine. This is for 1 atom. But if I'm asked about any molecule or any compound, then things will change. Like if I'm asked about 1 mole of H2. H2 is a molecule, or 1 mole of H2SO4, which is a compound. So what will you do? You have to express this in the form of mass, in the form of number, and in the form of volume. Right? So 1 mole of hydrogen will have 2 grams mass. Why so? Because 1 hydrogen atom is equal to 1 gram. But I have a molecule now. I have 2 atoms in this. So 1 atom is equal to 1 gram, but I have 2 atoms combined, which is called a molecule. So if I have to calculate the mass of a molecule, that will be 2 into 1 grams, because I have 2 atoms combined here. Right? For calculating the number of atoms, see,
Number is fixed. Suppose I have a dozen of bananas. That means there will be 12 units. But you must have seen in tomatoes, you must have seen some tomatoes are fused to each other. But we can't we can't count them as two. That is just a single tomato, one unit. If two tomatoes are fused with each other like this, suppose these are two tomatoes fused with each other, but I count it as one unit. This is the case with the molecule. They say number is fixed. 1 dozen means 12. That means 1 mole means Avogadro number of atoms. Number will be fixed. So suppose I take 1 mole of 1 mole of carbon. That means that is equal to 6 into 10 raised to power 23 atoms. Right? Because this number is fixed. Atoms should be 6 into 10 raised to power 23. And if I take 1 mole of hydrogen, it will be 6 into 10 raised to power 23 hydrogen atoms, because we are talking about atoms. But if I'm talking about molecule, that means 2 hydrogen atoms are attached to each other, but number won't change. That means if I talk about hydrogen molecule, hydrogen will be present in this way, in the form of molecule, but number is still the same. It is 6 into 10 raised to power 23, but when it is a molecule, I can't write here atoms. This will be 10 raised to power 23 molecules. If you're not getting it, please let me know. I'll tell you again. Right? जब आपके पास single element है, single atom की बात हो रही है, you'll have same number of atoms. But जब आपके पास किसी molecule की बात हो रही है, when two atoms are attached to each other, अगर molecule की बात है तो उसमें उतने ही number of molecules होंगे. ठीक है? So 1 mole of atom is equal to Avogadro number of atoms, and 1 mole of any molecule will be equal to Avogadro number of molecules. This is very important point to solve the questions. Those who have not got it, please raise your hands. I'll repeat. एक बार नहीं आया, दो बार नहीं आया, पर क्वेश्चन नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी. टेल मी, किसको नहीं समझ आया वो मुझे बताओ. अच्छा, किसको आ गया समझ वो बताओ. Raise your hands if you understood it. Seriously, don't make a mistake, है ना? Please. ठीक है. So, अब आपको ये difference समझना है. If you are talking about atoms, this is in the form of single unit. But if you are talking about molecule, this is in the form of two atoms combined to each other, which is molecule. You can write it because I'll erase it afterwards. You can make this. This is the difference between atom and molecule. Numbers remain same, but you'll express this in the form of molecules. Done? Hope you have done it. Just this much part, because now I'll tell you that if you're given that 1 mole of molecule, then you can interpret fine. This 1 mole of molecule will contain Avogadro number of molecules. But if you're not asked about molecules, you are asked to tell about the number of atoms present in it. What you have to do, you have to
multiply this number, Avogadro number. In short, I'll write it as 6 into 10 raised to power 23, which is 6.022 10 raised to power 23 in short, right? So you have to multiply this number with the number of atoms present in a molecule, which is called atomicity. Atomicity means how many number of atoms are attached to each other in a molecule. So atomicity of H2 gas is 2 because 2 atoms are combined to each other. So this much number of molecules would mean that if I break this molecule, I will be left with how many number of atoms? If I break these, every molecule is getting converted into atoms, and this is 6 into 2 into 10 raised to power 23 number of atoms. That means with Avogadro number, you have to multiply the atomicity of that molecule. To convert a molecule into atom, you have to multiply the Avogadro number with its atomicity. So this will give you 2 into Avogadro number of atoms, right? So we have written that 1 mole of hydrogen contains Avogadro number of molecules because H2 exists in the form of molecule. But if you are asked to tell it in the form of atoms, this would be 2 into Avogadro number of atoms because atomicity of hydrogen is 2. Got it? Number will remain the same for 1 mole, but if you are asked about molecules, this will be equal to Avogadro number of molecules. And if you have to convert it into atoms, you have to multiply this Avogadro number with its atomicity. Fine? And this volume is still the same. For 1 mole, it will always be 22.4 liters, irrespective of the existence of that element in the form of molecule or atom. That does not change the volume, right? This will remain the same for 1 mole, right? This is not related to atomicity or whatever. This will just change your mass. This will change your number of atoms. Now, do the same thing for 1 mole of H2SO4. If I'm asked to tell the things about 1 mole of H2SO4, its mass will be, mass of hydrogen is 2. This is 2 into 1 plus mass of sulfur is 32 plus mass of oxygen is 16. This gives you 64 plus 32 plus 2, 98 grams is the mass of 1 mole of sulfuric acid. Just adding the atomic masses of the element, which you should remember. Now talking about the number of molecules and number of atoms. So what is the number of molecules present here? So 1 mole of sulfuric acid has Avogadro number of molecules. This is fixed. But if I want to calculate the number of atoms present in sulfuric acid, I have to multiply this with how many atoms are present in sulfuric acid? 2 hydrogen, 1 sulfur, 4 oxygen. Total 7 atoms. So I have to multiply this Avogadro number with 7 to convert it into atoms, right? And the volume will be fixed. This is equal to 22.4 liters. Sorry. So whenever you get a question based on mole concept, first thing you should do is you should use your mind to make this thing, right? Because every question which is based on the mole concept, that actually does not have any particular formula. It is just based on unitary method. You should know how many grams have how many number of molecules and how many liters of volume it contains. You just know
if you know this simple interpretation of this any molecule or any compound, you'll be able to attempt any question related to mole concept because we don't have a particular formula. Yes, we do, but that is unitary method also only. Like you must have done these formulas. If you want to calculate number of moles, that is equal to mass upon molar mass or given weight upon molar mass or given number of molecules upon Avogadro number of molecules or given volume upon 22.4 liter, which is volume of 1 liter. This is shortcut formula, but you should know the concept. For the complicated questions, you should know the concept. And concept is nothing, it is just the unitary method. Like if I write that I have any element, you can say, if okay, I take oxygen. For if I have a question which is based on oxygen, what I'll do, I'll write this thing. 1 mole oxygen would mean 32 grams mass. This would mean Avogadro number of molecules. And this would mean 22.4 liters volume. Now they can ask me any question. They can relate any two things. Like if they ask how many grams of oxygen is present in 2.5 mole, right? If this is my question, that means they are relating these two things. If I already write everything which is there in 1 mole of oxygen, it won't be difficult for me to interpret what they are asking. They are asking how many grams of oxygen is present in 2.5 mole. First of all, I'll see what is relationship between mole and grams of oxygen. It says 1 mole 32 grams means 1 mole is having 32 grams. So 2.5 mole will have 32 into 2.5. This much grams is present in 2.5 mole of oxygen. This is just the one way. They may ask how many molecules are present, molecules of oxygen is present in 2.5 mole. Then you should know that 1 mole of oxygen contains how much? Avogadro number of molecules. So 2.5 mole will have Avogadro into 2.5 number of molecules. So if you know the direct relationship, you'll be able to solve the question. If you know how much is present in 1 mole or 1 gram, you'll be able to do the things. थोड़ा सा complicate करते हैं इसको. Suppose मैंने ये लिख लिया 1 mole O2 has 32 grams and this much molecules and this much liters. Can you tell me how many grams are present in 3 into 10 raised to power 23 atoms? Suppose you asked this. So how you need to proceed? पहले तो आपको देखना है grams और atoms के बीच में क्या relationship है. अब जब तक आप ये line सामने नहीं लिखोगे, you won't be able to interpret. आप ये पहले सामने लिख लेना, फिर आप देखना अच्छा grams में और मुझे यहाँ तो molecules है, तो मतलब पहले तो मुझे atoms के साथ इसको relate करना पड़ेगा. So if it has Avogadro number of molecules, that would mean it contains 2 atoms in a molecule. This will be equal to 2 into Avogadro number of atoms in it. Right? So 2 into Avogadro number of atoms are present in 32 grams. So 32 grams has 2 into Avogadro number of atoms.
Now you are asked how many grams are present in this much number of atoms. Let's reverse it because you can see it in this way. Let's reverse it because we need to calculate grams in atoms. So we write it this way, that 2 into Avogadro number of atoms, 2 into Avogadro number of atoms gives you how many grams? 32 grams. So one atom will have 32 upon 2 into Avogadro number of atoms. And how much? 3 into 10 raised to power 23 atoms will give you this much grams. You have to solve it. ठीक है? This is just unitary. आपको जितने में दिया है, जितने में है वो existence लिखो और जितने में पूछा है उसको कैलकुलेट करो. मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, फिर आप देखना आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी होगी. Suppose I have, let's say, 1 mole of nitrogen. Nitrogen's mass is 14 grams in 1 mole of, अब ये 2 है तो 2 into 14 grams क्योंकि ये मॉलिक्यूल है. अगर मैं इसका वॉल्यूम देखूंगी तो वॉल्यूम तो 22.4 लीटर्स है. अगर मैं इसका नंबर देखूंगी तो दैट विल बी एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और 2 into एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स. आई होप दिस मच इज क्लियर. ये तो पता लग गया अभी सबको, सब ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. अब क्वेश्चन इज, if it is asked that how many grams of nitrogen is present in 1 into 10 raised to power 20 atoms. So tell me which two things you need to relate first. That is grams and atoms. तो आपने ऊपर और कुछ नहीं देखना है, बस ग्राम्स देखना है और एटम्स का इनका रिलेशनशिप देखना है, which is कि 28 ग्राम्स में 2 into Avogadro number of atoms हैं. This is the direct relationship जो आपको खुद इंटरप्रेट करना होता है. क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया होता. इतने ग्राम्स में इतने एटम्स हैं, तो आपको तो इतने एटम्स में पूछा है, मतलब हमको रिवर्स करना पड़ेगा. तो हम इसको रिवर्स में लिखते हैं कि हाँ 2 into Avogadro नंबर एटम्स में हमारे पास 28 ग्राम्स हैं. तो एक एटम में कितने ग्राम्स होंगे? 1 atom will have 28 upon 2 into Avogadro number of atoms. और आपसे कितने में पूछा है? 1 into 10 raised to power 20 atoms में कितने ग्राम्स हैं? तो इसको आप इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे और आपके पास इतने ग्राम्स प्रेजेंट होंगे. राइट. दिस इज यूनिटरी. जैसे आपको कोई चॉकलेट देता है, आपको कोई बोलता है कि हाँ जी अगर मेरे पास 100 रुपीज में 10 चॉकलेट्स आती हैं तो एक चॉकलेट की प्राइस क्या है. ठीक है. तो जैसे आप यूनिटरी लगाते हो 100/10 करके आपको कर दोगे, तो वैसे ही आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं या ग्राम्स कैलकुलेट करना है. तो पहले जो भी क्वेश्चन में आपको, जैसे सपोज आपको मीथेन दिया है, मीथेन CH4 ये एक मॉलिक्यूल हो गया. अब इसका मास आपको कैलकुलेट करना है. दिस इज इक्वल टू 16 ग्राम्स. इसका वॉल्यूम आपका फिक्स रहेगा 22.4 लीटर्स. इसका नंबर विल बी एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट मीथेन में यू हैव 5 एटम्स, तो 5 into Avogadro number of atoms. राइट. अब अगर ये मुझे पूछा कि हाँ बताओ 10 एटम्स में, सिर्फ 10 एटम्स में कितना लीटर्स प्रेजेंट है, तो मुझे एटम्स और लीटर्स का पहले डायरेक्ट रिलेशनशिप देखना है कि 5 into Avogadro number of atoms पे 22.4 लीटर्स है, तो 1 एटम में कितना होगा? 22.4 अपॉन 5 into Avogadro, और 10 एटम्स में कितना होगा? into 10 करना. All unitary. Just read the question, see which two things are being related, उनका direct relationship लिखो
एक एटम में निकालो और जितने में पूछे उतने में निकालो। ठीक है, आता है यूनिटरी सॉल्व करना सबको कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, अब आप ही करोगे, मैंने इनफ एग्जांपल दिया है, आप अभी करोगे। आपको खुद लिखना है, जो भी कंपाउंड मैं आपको दे रही हूँ आपको खुद लिखना है। आई एम गिविंग यू 1 मोल ऑफ HCl, सो यू नीड टू टेल मी, सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने बोली पीछे वैसे लिख लेना। यू नीड टू टेल मी हाउ मेनी grams of HCl is present in 3.5 mole. Tell me. If you have done, please give me the answer. Have you done it? You can unmute and give me the answer if you've done it. Answer. Raise your hands who have done it. Raise your. Nobody. Nobody could do it. Raise your hands who have done it. Okay. That means you're still able to do it. See, what you have to do, 8 mole it's HCl है आपके पास. What is the mass of HCl? Mass of hydrogen is 1 and mass of chlorine is 35.5. So this gives you 36.5 grams. 1 mole of HCl contains 36.5 grams. You should know the mass of HCl for this. Then talking about volume, it is fixed 22.4 liters. Talking about number, it is fixed Avogadro number of molecules. And if you are asked about atoms, this is 2 into Avogadro number of atoms. Because HCl में 2 atoms हैं. So, एक molecule में 2 atoms हैं, तो 2 से multiply करोगे, this gives you number. But you are asked about grams and moles. This is the relationship between grams and moles. So 1 mole has 36.5 grams of HCl. तो एक में इतना है तो 3.5 में कितना होगा? जैसे बोलते हैं एक टॉफी की कीमत अगर 10 रुपीज है, 3 टॉफीज की कितनी होगी? 3 into 10 करते हो। वैसे यू आस्क्ड कि 1 मोल के इतना मास है तो 3.5 का कितना होगा? दिस विल बी 36.5 into
3. This much grams is present in 3.5 mole of HCl. Was it difficult? This is just unitary बेटा. You have to apply this. जैसे टॉफी खरीदने का या एक इतने की है तो 10 कितने की होगी, 10 इतने की है तो एक कितने की होगी. जैसे ऐसे सोचते हो ना, वैसे सोचना है ये. राइट. आई गिव यू वन मोर पार्ट. इसी पे बेस्ड इसमें कम से कम 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं. यू कैन रिलेट 10 टाइप्स ऑफ थिंग्स इन इट. इसलिए ऊपर लिखना जरूरी है. उससे आपको क्लियर पिक्चर मिलती है कि क्या पूछा है. अभी देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इससे फ्रेम करती हूँ. ट्राई डूइंग दैट. एवरीथिंग इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू. ये जो ऊपर लिखा है दिस यू हैव टू इंटरप्रेट कि असली में क्या होता है एक्चुअल में एंड व्हाट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम यू. Suppose I'm asking how many number of atoms are present in 70 grams of HCl. This is the question. आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स इन 70 grams of HCl या 72 grams कर लो. ठीक है. 72 grams of HCl में you have to calculate how many number of atoms are present. So आपको पहले तो देखना है grams और atoms में what is the relationship. This much grams, this much atoms. That means 36.5 grams में present है 2 into Avogadro number of atoms. Right? लेकिन एटम से ग्राम्स निकालने हैं, रिवर्स करना पड़ेगा. सो इसको रिवर्स में लिखो. मैं जान के आपको रिवर्स में दे दूं आगे आपको पता लगे कि अगर सीधा नहीं पूछा है तो आपको उसको रिवर्स करना है. ठीक है. सो वी हैव 2 into Avogadro number of atoms contains 36.5 grams. So one atom will have 36.5 upon 2 into Avogadro number of atoms. और आपसे कितना पूछा है 72 ग्राम्स में कितना होगा, तो आप इसको 72 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो. राइट. आई डोंट थिंक यू आर गेटिंग इट. Anyways, let me try once again. See beta, this is mole concept. We are trying to calculate कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस का जो उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है उनके मास में, वॉल्यूम में और नंबर में, किसी भी चीज की 1 मोल में जो उसका मास होता है ना, दैट इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास. उसका वॉल्यूम इज फिक्स्ड 22.4 लीटर्स. उसका नंबर इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स. दिस इज समथिंग फिक्स्ड. 1 मोल ऑफ एनी एटम कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स. ये मोल जैसे हमारा लीटर होता है, केजी होता है, वैसे ही इनका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मोल होता है. एक मोल में किसी भी चीज की एक मोल का मास उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है. उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर्स होता है. उसका नंबर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होता है. इफ इट इज आस्क्ड अबाउट एनी एटम, अगर यही चीज मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो उसका मास को उसके जितने भी मॉलिक्यूल में वो नंबर है ना उससे मल्टीप्लाई करना होता है. लेकिन क्योंकि ये एक ही मोल है, एक हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये 1 मींस 1 मोल. ये जो कोफिशिएंट होता है ये 1 मोल होता है. तो वॉल्यूम 1 मोल की हमेशा फिक्स्ड होती है, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो कोई एलिमेंट हो, चाहे वो कोई मॉलिक्यूल हो. नंबर का क्या फर्क है, नंबर तो सेम है, लेकिन अगर एक एलिमेंट की बात है, अकेले एटम की बात है, तो उसमें उतने ही नंबर ऑफ एटम्स होते हैं. और अगर एक मॉलिक्यूल की बात है तो उसमें उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं. बट अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और लेकिन हमसे एटम्स पूछे हैं, तो जो भी इस एलिमेंट की एटॉमिसिटी है आपको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है. एवोगैड्रो नंबर 2 into एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा. उतने आपके पास
एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, इस मच, इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये सीधा सीधा आप सारी चीजों के लिए निकाल सकते हो कि नहीं, ये बताओ पहले, ये हो सकता है इतना? yes, अब देखो, मैंने आपको बोला कि वो इन्हीं चीज को रिलेट करते हैं, कोई भी क्वेश्चन को पुट करेंगे तो कोई दो चीजें इसमें से रिलेटेड होंगी। इट कुड बी, वो ये पूछ सकते हैं, अच्छा ये बताओ 10 मोल में कितने ग्राम्स है, ये बताओ 10 मोल में कितने लीटर्स हैं, 10 मोल में कितने एटम्स हैं। तो पहले आपको एक मोल का तो पता होना चाहिए कि उसमें कितने हैं, राइट? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, जब भी क्वेश्चन करो ये चीज पहले लिख लो, फिर देखो कि क्या चीज पूछी है। मोल और मास का रिलेशनशिप, मोल और वॉल्यूम का रिलेशनशिप, या मोल और नंबर का रिलेशनशिप, क्या चीज की रिलेशनशिप पूछी है, उसका डायरेक्ट चीज लिख लो कि अच्छा एक मोल में तो इतने एटम है, अब जितने में पूछे उसमें निकाल लो। ज्यादा में पूछे होते तो मल्टीप्लाई करते। ठीक है, ये पता है ना कि छोटा वो, तो बस वही यूनिटरी वाला है कि वैसे ही जैसे आप चॉकलेट्स, मैं जब इसको करती थी तो आई यूज्ड टू थिंक अबाउट चॉकलेट्स। ओके फाइन, अगर मेरे पास 100 चॉकलेट्स या 10 चॉकलेट्स की प्राइस इतनी है तो 1 की कितनी होगी, ओके आई हैव टू डिवाइड, वैसा सोचती थी मैं। अगर मुझे एक की दी हुई है, ज्यादा की निकाली तो आई हैव टू मल्टीप्लाई लाइक दैट। वो अपने माइंड में सेट करो और फिर देखो क्या दो चीजें रिलेट किया डायरेक्ट। चॉकलेट्स का मैं डायरेक्ट बता रही हूँ कि अच्छा एक चॉकलेट की प्राइस अगर 10 रुपीज है, 10 की कितनी होगी, तब तो आप फटाफट निकाल लेते हो। सेम टाइप से आपको क्वेश्चन के टाइम पे प्रोसेस करना है कि हाँ मुझे एक की तो पता है वॉल्यूम कितनी है, जितने मर्जी की पूछ लो। मुझे एक का मास पता है, जितने मर्जी का पूछ लो। मुझे एक का नंबर पता है कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, जितना मर्जी का पूछ लो। वेन यू नो कि एक की कीमत कितनी है, आप जितना मर्जी का निकाल सकते हो। सेम वे में है ये, बस आपको वो खुद सोचना है यहाँ पर, क्योंकि वो हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट है। तो वो चॉकलेट वाली बात कि कितने का कितना मिलेगा, वो आपको खुद लिखना होता है क्वेश्चन में, उसके बाद यूनिटरी ही लगाना है। चलो अब ट्राई करना, नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं फिर से बताऊंगी, बट डोंट लीव इट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर, राइट? सो विल टॉक अबाउट, किसके बारे में बात करेंगे? कोई कंपाउंड बताओ, विच इज योर फेवरेट कंपाउंड? टेल मी। कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, ठीक है? सारे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो सपोज यू हैव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाउ यू विल टेल मी व्हाट इज द मास of 1 mole of carbon dioxide, total mass, how much? What is mass of 44, 44, total? Carbon का 12 है और ऑक्सीजन का 16 है, 2 into 16 is 32. This gives you 44 grams. So what will be the volume? Tell me. 22.4 liter, And what will be the number of molecules? And what is the number of atoms here? Right? Now you know this. Now if I ask you and are present in 88 grams of CO2, how will you proceed? क्या करना है पहले इसमें? Which two things are related? कौन सी दो चीजें? mass and आपको ये और ये सोचना है, ठीक है? एटम्स वाला सोचना है, मतलब स्पेसिफिकली दिस। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है आपके पास? दैट 44 grams have 3 into Avogadro number of atoms. 44 grams का आपके पास है, ठीक है? 1 ग्राम में निकाल सकते हो। If 44 grams have Avogadro number, 3 into Avogadro number of atoms, 1 ग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम will contain how many number of atoms? How many grams of atom? No, how many number of atoms? Sorry, 1 ग्राम में कितने atoms?
3 into Avogadro's number divided 3 into Avogadro number of atoms divided by 44. 44 ग्राम्स में आपको थिंग इज गिवन और आपको 1 ग्राम में निकालनी है. दिस इज 3 into एवोगैड्रो डिवाइडेड बाय 44 और आपसे कितने में पूछी है? 88 ग्राम. 8 ग्राम्स. ठीक है, तो कितना होगा? 1 ग्राम में आपके पास इतने एटम्स हैं और 88 ग्राम्स में इतने हो जाएंगे. आप इसको सॉल्व करोगे 6 into एवोगैड्रो नंबर. एवोगैड्रो नंबर तो तब मैं आपको कैलकुलेशंस में नहीं डालना चाहती, मैं आपको फ्लो में डालना चाहती हूँ कि कैसे सोचते हैं उसको. आपको फिर पूरा ये 6 into 10 raised to power 23 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है. बट सॉल्विंग इज फाइन, पहले गो इनटू द फ्लो कि पूछा क्या है, करना कैसे है. तो इसी को अब अपना नोट इट डाउन. अभी आपने खुद ही सबने बोल के किया है. नोट इट डाउन एंड टेक इट एज रेफरेंस. कोई भी दो चीजें कुछ भी पूछा हो, आपको क्वेश्चन तो ऐसे पूछा होगा, ये सब आपको खुद लिखना है. फिर आपको खुद डिसाइड करना है अच्छा इन दोनों चीजों में रिलेशन है. देन यू राइट इट, ये रिलेशनशिप है. Then you calculate it for 1 gram or 1 atom or 1 liter, whatever is asked. और फिर जितने के लिए पूछा है उतने. ठीक है, सेम वे में कि हाँ अगर 10 चॉकलेट्स 100 रुपीज के, 1 कितने की है, और फिर अगर मुझे 15 की प्राइस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, वैसे प्रोसेस करो. यूनिटरी मेथड में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं. तो उसको चॉकलेट्स, मैंने कहा मैं खुद चॉकलेट्स वाले सोचती थी, अच्छा ये तो मैं इसमें क्या करूंगी, किसको किससे डिवाइड करूंगी, या फिर शॉर्टकट होता है वो नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला. बट गो फॉर दिस जो आपके कॉन्सेप्ट है, दैट यू शुड नो. फॉर्मूला तो कभी भी रटा जा सकता है, उसमें पुट की जा सकती है चीजें. दिस इज द कॉन्सेप्ट, राइट? विल डू वन मोर क्वेश्चन, फिनिश इट फास्ट. लेट मी नो व्हेन. That Yes. yes. चलो फिर और करते हैं. So you suppose you have MAC, right? And I ask you how many liters of NaCl is present in 30 grams, right? So what you have to write, पहले जो आपका लीटर है और ग्राम्स है उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है? हाउ मेनी लीटर्स कंटेन्स हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaCl? टेल मी. मास ऑफ NaCl मालूम है? नहीं, एटॉमिक मास लर्न करो बच्चा. 1 mole NaCl will have Na is 23 and Cl is 35.5. This gives you 58.5 grams. Volume 22.4 liters. And number, Avogadro number of molecule, or 2 into Avogadro number of atoms. But this time we are not asked about number of atoms. We are asked about mass and volume, right? So 58.5 grams will have 22.4 liters of volume. आपसे कितने की पूछी है? 30 grams. मैंने क्या करेंगे? 1 gram. हाँ जी? What will do? We will calculate
number of liters present in 1 gram, right? So 58.5 में 22.4 liters है, तो 1 gram will have 22.4 upon 58.5, and we are asked in 30 grams. फिर 30 grams में होगा 22.4 upon 58.5 into 30 grams. Got it? Yes. Yeah. You need more questions or you're done? कि हो जाएगा? Tell me. हो जाएगा. हो जाएगा. Thank you. चलो, let's do next thing. Concentration terms आपने किए, molarity, mole fraction, mass percentage. किया है? अभी नहीं किया? No. Okay, तो फिर एक और ये कर देते हैं, मोल कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है? प्लीज अब कर लेना, है ना? हो जाएगा ना? यू सेड इट, अब हो जाएगा. So I'll take the sulfuric acid, and my question to you is, how many grams? How many grams of H2O is present in 0.5 mole? बस फटाफट give me the answer. और हो सकता है ये मोल और ग्राम्स का रिलेशनशिप है. मैम आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही? आ रही है मैम. अच्छा ठीक है. I just need the answer. अब मेरी आवाज की कोई बात नहीं, आपकी आवाज आनी चाहिए. What is the answer for this? Thank you. So let me tell you, this is 1 mole of sulfuric acid. This gives you 98 grams. So you asked about 0.5 mole. ठीक है? 0.5 means half mole, 5 upon 10. तो आप इसको हाफ मोल भी सोच सकते हो या 0.5 भी कर सकते हो. This into 0.5 will give you 49 grams, right? So mole concept is not difficult, बेटा. You have to just go with the flow कि हाँ जी मुझे एक के लिए पहले हर चीज पता होनी चाहिए, और इसके लिए आपको हर कंपाउंड के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा कि किस कंपाउंड में क्या चीजें हैं. अब आगे आपको थोड़ा सा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेंगे, दे विल रिलेट टू थिंग्स. दो स्टेप्स होंगे, तो इसीलिए सारा लिखना जरूरी होता है ताकि आपके माइंड में शुरू में लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको खुद पता लग जाएगा. आप सोचने लग जाएंगे, हाँ जी आई नो दिस मच ग्राम्स इज प्रेजेंट इन दिस मच मोल और दिस मच लीटर्स इज प्रेजेंट इन दिस मच मोल. वो अपने आप दिमाग में आ जाता है, फिर आपको सारा लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. पर ये वो चीज है कि आपको एक्चुअल वो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, वो बाय डिफॉल्ट क्योंकि फैक्चुअल होती है तो आपको वहां से सोचनी पड़ती है. वो आपको गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में, खुद सोचना है कि अच्छा एक का पहले मैं देख लेती हूँ कितना होता है, फिर क्वेश्चन होगा. बच्चे सीधा क्वेश्चन पूछते हैं और पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें तो सारी चीजें दी नहीं हुई है, तो वो नहीं दी होंगी. यू हैव टू थिंक अबाउट इट. यू हैव टू नो दिस कि एक मोल का क्या रिलेशनशिप है विद मास, विद वॉल्यूम, विद नंबर, राइट? ओके, थैंक यू. Thank you.